Hey guys, what's up? I'm Nalin, your robotics mentor और आज कुछ बढ़िया करते हैं। कल रात को इंटरनेट चला गया, बहुत दुख वाली बात है। और ये तो इंटरनेट वाला तभी मैंने कुछ सोचा कि यार कुछ तो करना चाहिए। इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब केवमैन जैसी फीलिंग आ रही थी कुछ देर तक। फिर ध्यान आया कि रोबोटिक्स आता है मुझे, मतलब भूल नहीं गया था बट दिमाग में चला बूम, रोबोटिक्स। कुछ इंटरेस्टिंग करने का सोचा, प्लान आउट किया कि ठीक है क्या करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। और इतने में गूगल क्रोम का ये वाली गेम याद आई, तो इसके ऊपर छोटा सा हम कुछ करेंगे। ठीक है, वी विल ट्राई टू ऑटोमेट दिस थिंग यूजिंग robotics. Kind of cool, right? I know. I'm genius. Like all of. You got the idea, right? So let's go. Okay. Now coming to the point. हमको चाहिए एक LDR जो कि कुछ इस टाइप से आएगा, राइट? हमारा एक LDR रहेगा स्क्रीन के ऊपर, यू कैन सी। जब भी कोई ट्री आता है या कुछ सामने आएगा, LDR will detect it because it's white, black kind of a thing. Okay. उसके लिए हम Arduino का यूज करेंगे और स्पेस बार दबाने के लिए हम सर्वो का यूज करेंगे। लाइक तीन डिफरेंट चीजें चाहिए, Arduino, सर्वो एंड LDR। थ्री थिंग्स वी नीड। ठीक है। जो वैल्यूज आती है हमारी, लेट्स चेक आउट द वैल्यू गाइस, एज यू कैन सी। ठीक है, जैसे अगर मैं गेम स्टार्ट करता हूँ, सो यू विल सी कि हमारा जैसे कुछ आएगा तो वैल्यू आएगी। यू सी। ओके, ऑटो स्क्रॉल बंद कर दिया, देखते हैं वैल्यू कहाँ गई। ये यू सी। बेसिकली वन जो वैल्यू आई है ये मेरी इसके थ्रू आई है, राइट? जब भी कुछ ब्लैक आएगा इसके ऊपर तो वैल्यू 1 आएगी, वरना वैल्यू 0 आएगी। और जैसी वैल्यू 1 आती है हम स्पेस बार दबाते हैं, वी प्रेस स्पेस बार और वो जंप करता है, राइट? दैट्स द आइडिया। यू कैन सी ओवर हियर। जैसी वो आएगा यू कैन सी जो रेड कलर है ब्लिंक करेगा, दैट्स द आइडिया, राइट? इट्स ऑटोमेटिकली डूइंग इट। और ऑटोमेटिकली कैसे कर रहा है? यूजिंग सिंपल सर्वो, राइट? सिंपल सर्वो का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे वैल्यू आती है वो स्पेस बार दबता है, वो जंप करता है। दैट्स द बेसिक आइडिया बिहाइंड द होल थिंग वी आर ट्राइंग टू डू, राइट? नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये कैसे बनाना है और ये कैसे होगा, व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू मेक इट। और ये थोड़ा इसको बेटर टेप से लगा सकते हैं, लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी इंप्रूव्ड ऑन इट, बट या दैट्स द बेसिक आइडिया टू गेट थिंग्स डन, और दैट्स द बेसिक थिंग वी वांट टू मेक टुडे। दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग डन। Now, coming to the point, it's making good score actually. Yeah, see, it's good. The score is good. Score is fine. Yeah, it got game over because I paused the game in between and then started again. Now, coming back to the point. What you could do. It's a simple code which I have written over here. Let me just remove this thing. One external camera over here. Yeah, cool. Now coming to the point, what we have to do. We have hash include servo that's required to get the servo done. We have int servo pin which is equal to 8. We can do whatever you want to, wherever you want to plant the servo. That's completely on you, not required. Like उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लगा सकते हैं, मस्त. Now coming to the point, servo hand. तो basically servo का object declare करा है हमने, simple है, all works right. हमने एक इनपुट लिया है पिन नंबर 6 के ऊपर, सीरियल बिगिन करा है, हैंड अटैच करा 8 पे। अगर इसमें से कोई भी पार्ट समझ नहीं आ रहा कोड का, गो बैक एंड वॉच माय सीरीज ऑन रोबोटिक्स। उसके अंदर मैंने सारे के सारा कोड प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करा है। उसमें हम ये सब बना रहे हैं, लाइक दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग सर्वो, एलडीआरस एंड एवरीथिंग। उसके अंदर मैंने पूरा कोड आपको एक्सप्लेन करा हुआ है। अगर कोई कोड आपको यहाँ पे समझ नहीं आता तो आप वापस वो वाली वीडियो जाके देख सकते हो, एंड इट्स प्रीटी ऑसम, मतलब एकदम बढ़िया है वो। Now, we have pin mode 6, we have serial begin which is 9600, hand attach at 8. Now coming to this point, it's digital value 6, so मैं 6 पे input ले रहा हूँ, that's the whole idea. I'm taking input from 6 and going forward that. Digital value अगर मेरी 1 होगी तो मैं hand dot write करता हूँ 70, so वो 70 पे जाता है। 100 का डिले डाला, यू कैन चेंज डिले अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। आप कैसे उसको लगाते हो, कितना दूर लगाते हो डायनो से, डायनो इज द नेम ऑफ द डायनासोर जो जंप करा, राइट? कितना दूर लगाते हो, कैसे लगाते हो, उन चीजों पे ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, राइट? दैट्स वेरिएबल। 100 का डिले हम वेरी कर सकते हैं। इनफैक्ट ये वेरी कर सकते हैं आपका कि 70 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, हाउ यू आर डूइंग इट, हाउ यू आर प्रोग्रामिंग, लाइक हाउ यू आर मेकिंग द हार्डवेयर ऑल टुगेदर, राइट? यू विल कीप दैट थिंग वेरिएबल डेफिनेटली। और फिर हम उसको 90 पे प्रिंट करेंगे, और इसकी जरूरत नहीं है, लाइक ये मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए, डीबगिंग के लिए लिखा है, बट इफ यू वांट यू कैन राइट इट, दैट्स ऑल। मतलब वैल्यू आएगी तो 70 वरना 90, एंड दैट्स प्रीटी मच ऑल।
If you want to see servo connections, I can show you that as well. That's not a problem at all. Let me give a moment. I will just switch on my camera, my external camera, and show it to you guys. So you can see these are my servo connections. My Arduino connections. You can see over here we got two over here. One is on pin number 6. Pin number 8 we have 5 volts and everything, and that's pretty much all what we need. Now let's have a quick gameplay for a while. Right, let's have a short quick gameplay just to see how it goes. And let me bring my Dino game on the okay, my bad guys. Yeah, okay, now let's start the game. Dun, 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 dun. Jump, jump, jump. Perhaps see, this is working good. Yeah, it's working pretty good actually. There's no denying the fact it's working awesome. It's working good. So yeah, so guys, that's the game. That's what you all need to do. If you got any doubts or any problem altogether, you can comment below. So that's one way to get things done, guys. So thank you very much for watching. Don't forget to like, subscribe, and share. Comment down below what next video you want me to do, want me to make, and we will make it. That's not a problem. And that's all for today. Bye bye, tada, see ya.